So you see here another function is there, which is called square root. Yes, so if a function which is this way, f of x is equal to रूट ओवर ऑफ x, ठीक है, कोई भी चीज डालो जिसमें क्या होगा गाइस, रूट ओवर कर देगा उसको, कोई भी डालो उसको क्या करेगा, रूट ओवर बना देगा. सो दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड गाइस हियर, क्या है, दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड square root functions. Yes, but one thing you have to remember, this x always should be r plus. R plus means this x should be always non-negative. x का वैल्यू नेगेटिव डालने से देखो, if we put here x is equal to -2, it will get here minus of root over minus of 2, and this is not real. And here we are dealing with real function. Yes, one thing you have to remember, whatever we have discussed in this type of function here, whatever we discuss here, all are क्या है, real functions here. So here we can put x equal to minus of 2, -3, -4, because there is no real number in this form. Yes, so the value of x always belongs to here r plus, and this is the graph for this square root function. Yes, and another function is called here square function. So नाम देखने से मालूम हो जाता है ना, f of x equal to x square बस. So this is the क्या है, this is the क्या guys, this is the square function. And you see here you can put any real number of x. That means the domain of this function will be real number. But you see, if you put here any real number, but you will get here always a positive value. Why? Because here you see कोई भी डालो, माइनस डालो, प्लस डालो, उसको तो स्क्वायर बना देगा. तो जो इमेज होगा ना, इमेज में हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव वैल्यू रहेगा. दैट मीन्स इसका जो रेंज होगा ना, दैट रेंज विल बी हियर r plus non-negative set of non-negative real numbers will be the range of this function. Yes, so you have to remember also the domain and range of this function. So domain will be real number. Yes, domain will be real number, that means r. Yes, r will be the domain, and r plus will be the range of this square function. Yes, and this is the graph. देखो, this will be the graph. This is a parabola, and already I have mentioned in previous slide, जो कोई भी फंक्शन ने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल देने से वो क्या हो जाता है, एक पैराबोला हो जाता है. देखो, दिस इज ए क्वाड्रेटिक पैराबोला, सॉरी पोलिनोमियल, एक्स स्क्वायर इज ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल. सो द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन विल बी ए पैराबोला. यस, दिस इज द ग्राफ.